morning, student. Today's topic is the revolution of October 1917 में रिवोल्यूशन हुआ अक्टूबर में, उसके बारे में देखेंगे. हैज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बॉल्विस ग्रुप, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्विस में वो बढ़ गया था. लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप. प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर देगी, डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी. इन सितंबर ही बिगन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories were brought together. On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Lenin Trotsky to organize the seizure. डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट ए सीक्रेट. जो इवेंट की डेट थी उसको सीक्रेट रखा गया. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रॉप्स. एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग ऑफ टू बॉल्विस न्यूज़पेपर. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph office and protect the mental place. In a swift response, Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest minister. Late in the day, the ship Arrow sailed the Winter Palace. Other vessels sailed down the Nile and took over various military points. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. At the meeting of the All-Russian Congress of Soviet in Petrograd, majority approved the Bolsheviks' action. Uprising took place in other cities में भी जो है बढ़ गया विद्रोह. There were heavy fighting especially in Moscow. मॉस्को में बढ़ा. But by December the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. लेकिन जब दिसंबर में बॉल्विक्स ने कंट्रोल कर लिया था मॉस्को को. ठीक है, अब देखिए क्या क्या चेंजेस ब्रॉट हुए अक्टूबर के बाद. Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and bank were nationalized. In November 1970, this meant that the government took over ownership and management. नए बैंक नेशनलाइज हो गए थे. गवर्नमेंट जो थी उसने ओनरशिप और मैनेजमेंट को ले लिया. लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसन वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबल्टी. इन सिटीज Bolshevik enforced the partition of large houses. According to family requirements, they banned the use of old title of aristocracies. To assert the change, न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी के लिए न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई. एन ऑफिशियल throwing a clothing competition organized in 1980 when the Soviet hat was chosen. इस तरीके से ड्रेस डिज़ाइन की गई. द बॉल्विस पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. नाम दिया गया बॉल्विस को. नवंबर 1970 बॉल्विस कंडक्टेड द इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शन किया गया. बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट. लेकिन उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला. इन जनवरी 1980 द असेंबली रिजेक्टेड बॉल्विक्स मेजर. लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. ही टोल्ड द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. In March 1980, despite opposition by their political alliance, Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the year that followed, the Bolsheviks